भाभी बोलती है कि अपनी अंदर की बात बोलती नहीं, बहुत सारा कुछ बोलती है। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। Whoa, that is awesome. Hello, Namaste. Welcome to SD Talks by SD Academia, the platform where we are celebrating and presenting upcoming rising women artists of India. We truly love them and we call them SD Tribe because their creation is wonderful. Hi, I'm your host Priya Gera, and today we are going to meet a charismatic personality, a beautiful human, and a fantastic artist, Rachna. Hi, Rachna ji, how are you? I'm good, ma'am. How are you doing? All well, Rachna ji, looking so good. बहुत ही refreshing feel आ रही है मुझे, and I think it's a Thank you. beautiful thing to start an interview. So रचना जी, Yeah. इससे पहले कि हम कॉन्वर्सेशन के अंदर जाएं, हम आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में बात करें, हम सब जानना चाहते हैं who is रचना. एक quick introduction about yourself. आप कहाँ से हैं, आप क्या करती हैं? So I'm born and brought up in Delhi. Okay. Currently हम लोग मुंबई में रहते हैं. I'm married. I'm 48 years old. I have 2 daughters. And that's about it. We have a small family, my husband, kids, and my mother-in-law. Yes, Rachna ji. And similarly, you know what I truly believe, अगर आपका interest, आपका actually में आपकी जो skills है वो art oriented है, फाइन आर्ट्स के किसी भी पार्ट से, इट्स डांसिंग, सिंगिंग, पोएट्री, राइटिंग, ये सब इंस्टेंटली नहीं आता. ये सब कुछ होता है, सब कुछ कनेक्टेड होता है आपके बचपन से, आपके बचपन के इंटरेस्ट से, है ना, जो चाइल्डहुड इंटरेस्ट होते हैं. सो आई रियली वांट टू नो रचना जी कि आपका बचपन कैसा था. सो व्हेन आई गो टू बैक टू माय चाइल्डहुड मेमोरीज, आई वुड से कि मैं बिल्कुल भी क्रिएटिव साइड पे नहीं थी. ड्राइंग से बहुत डरती थी. यूज्ड टू रन अवे. आई एम द यंगेस्ट सिबलिंग. And I used to always go at the fag end of the day and I used to tell my sister, Didi, ये मेरे को project मिला, please draw कर देना. But I think suddenly one fine day, I think I was in 7th grade, and back then कुछ भी आपको gift में मिलता था. You used to be on top of the world. So I got a small diary with a keychain from a relative of mine, which was a very cute thing. मतलब मैंने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं था उस time पे. I was so interested and एक idea आया कि why not I create something like this. But I was scared. कितना knowledge नहीं था उस time में. I took up a plastic which was school के diary के covers जो होते हैं. And I cut them into pieces and I didn't know how to join them. So I took a day. I thought about it. Then मैंने school में देखा हमारे canteen वाला wafers pack करता था. So he used to seal it with a candle. So I came back home and I just cut small pieces और उसको मैंने flame के ऊपर लेके उसको एक cover में turn किया. Then बहुत सारे colorful papers लेके उसके अंदर लगा के. So excitedly I went and I told mom कि mama I created this thing. She says अरे ये idea कहाँ से आया तुम्हें? I said बस वो diary मिला था तो I started doing that. So that was the first incident that I remember कि you know I can be on a creative side. True that. And you know what, Rachna ji, that time जहाँ पर YouTube, Google दूर तक हमारी लाइफ का पार्ट नहीं था, वहां पर डे टू डे जो एक्टिविटीज है वही हमारी इंस्पिरेशन थी. तो ये इंसिडेंट मुझे और इंस्पायरिंग लग रहा है कि यू नो एक बच्चा जो कैंटीन में जाकर यू नो अपने जो कैंटीन बॉय उनको देखता है कि वो कैंडल से सीलिंग कर रहे हैं. आई थिंक दैट इज अमेजिंग रचना जी. सो ये प्रूफ है, ये एक्चुअली एक विटनेस है आपके पूरे क्रिएटिव होने का कि why you are here and आप क्यों इस फील्ड को इस टाइम पर परस्यू कर रहे हैं. दैट इज अमेजिंग रचना जी. सिमिलरली अगर हम दोबारा से चाइल्डहुड फ्लैशबैक में जाएं, पेरेंट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में. एंड स्पेशली जब आपके पेरेंट्स को पता होता है कि यू आर नॉट इनटू यू नो आर्ट और पेंटिंग और समथिंग, तो स्पेशली आपको वहीं पर ही डालते हैं कि ये कमी है, ये प्रॉब्लम है, तो यही करो. ठीक है, तो क्या तब वैसा कुछ था और आपके मॉम और डैड क्या वो क्रिएटिव फील्ड से कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे? नहीं, my father was a chartered accountant and mummy is a homemaker. And but yes, mummy sings very well and mummy को long back एक उसमें रेडियो में, तब रेडियो में सिंगिंग का बहुत था, ऑप्शन आया था to sing. But since my elder sister was born after 9 years of marriage, the first child, so she gave up that career कि नहीं, अभी kids are important, you know. वो ड्राइंग बहुत अच्छी करती हैं but उनको वो कभी एक्सपोजर नहीं मिला because उनके फादर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे in these things. So back then वो girls will not get that exposure.
So वो नहीं था, but mummy always pushed me कि हाँ जो तुम्हारा मन करता है वो करना चाहिए. Though पापा wanted के CA हैं तो 3 बच्चों में से कोई एक तो उनके साथ join करे. But I think हम तीनों ही अलग-अलग fields में. None of us joined him. And he's never pushed us for anything. उनको लगता था बेटा जो आपकी creativity है आप उसमें करो, जो आपका interest है उसमें करो. Wonderful, Rachna ji, and I think that is so inspiring कि आप अपने बच्चे को, अपने child को उस direction में जाने दें जहाँ पर वो actually जाना चाहते हैं. Now similarly, क्योंकि हम बचपन की गलियों में घूम रहे हैं, मैं visualize कर रही हूँ आपका बचपन और वो सारी की सारी चीजें. So you know, हम उस टाइम की बात कर रहे थे जहाँ पे computers नहीं थे, जहाँ पे video games and all ये सब चीजें नहीं होती थी. And जो हमारी summer vacations होती थी उसके अंदर हम यही skills, यही hobbies exchange कर like barter system हम सीखते थे और अपनी vacations को spend करते थे. So, that's right. Do you remember anything, Rachna ji, back then? जहाँ पर आपने कुछ क्रिएटिव चीजें एक्सप्लोर करी हो? We did. We used to create libraries. I found it very creative because उस टाइम पे अमर चित्र कथा, आर्चीज ये सब बहुत होता था. So we used to create a library कि तुम्हारे पास 4 है, मेरे पास 5 है, चलो let's just put a library. And we would put up a stall in the park in the corner and tell our friends and their parents कि हम लोग ये लगा रहे हैं, please come and take the Amar Chitra Katha, read it and give it to us by tomorrow and give us 50 paisa for this so that we can have orange bars the next day. That is so cute. So I remember we used to be really into it. और हम लोगों को मेरे को उसमें जैसे कोई भी नए घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो साथ में रेत होता था, उसमें जाके खेलना and finding the small shells was the biggest hobby. And I still like बीच के पास जाओ तो shells इकट्ठे करो या कुछ something different that you see. So I think I had that bent, but मैंने कभी initially उस side पे ध्यान नहीं दिया. But later part, of course, I did. And so आपने अपना college कब खत्म किया and आपने किस चीज में अपनी डिग्री करी? I did my graduation in psychology honors from Kamla Nehru College, Delhi. And right after my college, I got a 6 months का contract basis पे City Bank का मिलता था उस time पे as a trainee. वहाँ से schooling करके college करके right, I think after a year I got married. So I was pretty young when I got married. I turned 23 after my marriage. So, yeah. So and we had a love marriage. तो इसलिए मेरे parents को ज़्यादा वो था कि बच्चे शादी कर दो तो ठीक चलेंगे. So then we gave in. Okay. So that's it. That's about my college journey, ma'am. And Rachna ji, similarly, जैसे आपने बताया कि at the age of 23 you got married, right? So एक जो होता है ना, एक fine line होती है शादी से पहले की और शादी के बाद की, आपके इंटरेस्ट को लेकर, आपकी लाइफ एंड आपके पर्सपेक्टिव को लेकर. सो शादी के बाद क्या चेंजेस आए इन अ गुड वे और मे बी इन अ बैड वे? So it has been always in a good way for me because मेरे husband बहुत शुरू से pushy थे. He's always telling me the best part कि ये अच्छा लग रहा है और ये नहीं अच्छा लग रहा, ये तेरा हाथ का काम नहीं लग रहा है, तो you need to improve on this. And my daughters, they are always telling me since now both of them have gone there studying. दोनों अपना एक कॉलेज खत्म कर चुकी है और एक कर रही है. दोनों बोलते कि मम्मी we are not there now. So आपको कितने क्रिएटिव हो, so you should do these things. Right after marriage, जैसे मेरे mother-in-law ने push किया तो मेरा भी interest develop हुआ, तो stuff toy making सीखा पहले. फिर उसके बाद I did glass painting, the painting that you can see behind. Yes, I've done paintings like this. It, yeah. बहुत सारे paintings बनाए and उसके exhibitions किया. I used to sell at Diwali melas. Then I also learned potteries, pot decorations. फिर मुझे लगा अभी ये छोटा-छोटा बहुत हो गया. I should do something better. So I joined a government institute at ITO, which is called that Bal Bhavan. So where I learned about how to create things from the waste. I did my training in that and I specialized in that. And I started looking for vendors जो मेरे को handmade paper supply कर सकते हैं. So I could create things, you know. दिल्ली के स्कूल्स में एक कॉन्सेप्ट है कि वो सबके लिए एक पेपर एडिशन आता है बच्चों का. तो द स्कूल से हम पेपर ले रहे हैं, आप हमें रिटर्न में क्या देंगे? न्यूज़पेपर्स उस टाइम पे हम जैसे क्रिएटिव लोगों को एज अ फ्रीलांसर लेते थे एंड आर्ली बेसिस पे वी यूज्ड टू गो एंड टीच इन द स्कूल. सो मेरा उस समय मेन पॉइंट होता था हाउ टू यूज ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड क्रिएट थिंग्स बट शो द हैंडमेड पेपर्स एंड गिव नॉलेज टू द चिल्ड्रन. राइट. तो रचना जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी जो आपका करंट लाइफ है, अभी जो आप करंट जो रचना है उनमें और 10 साल पहले के जो रचना थे, दोनों रचना में कितना डिफरेंस है? पहले इतनी थी, अभी इतनी हो, बिकॉज मैं पहले बहुत
शाय थी, ज्यादा नहीं बोलती थी, एकदम आई वुडंट टॉक मेरे दिल की बात या व्हाट आई वांट टू डू आई वुड नॉट से। अभी चेंज इतना है कि अभी माय हस्बैंड आल्सो सेज, अभी बोलती है कि अपनी अंदर की बात बोलती नहीं, बहुत सारा कुछ बोलती है। Now you're more expressive. Yes, I am, and I feel it shows in my work also कि जो मेरे अंदर thought process चल रहा है, तो मैं अपने work में भी दिखाना चाहती हूँ वो चीज को, कि I want to show that. And even if you are standing in a exhibition, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, अगर आप expressive हैं, so you can actually explain your work and whole idea to the customer. And similarly, मैं दोबारा से उन्हीं 10 साल पहले की बातों में जाती हूँ. So हम हर phase में ना अपने आप को कुछ certain targets देते हैं कि हम आने वाले टाइम पर कुछ ऐसा करेंगे, कुछ वैसा करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, यू नो, वी यंगस्टर व्हाट वी थिंक, सोचते हैं कि 25 से पहले घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, सब कुछ कर देते हैं कि 25 से पहले सब अचीव करना है. सो ऐसी छोटी छोटी चीजें, ऐसे छोटे छोटे गोल्स यू रिमेम्बर आपने अपने लिए सेट किए थे, क्या आप उन्हें पूरा कर पा रहे हैं या कर चुकी हैं? Initially, I would say कि बहुत छोटा सोचते थे, मतलब I used to be content in what I had. Slowly, I started realizing कि I want more progress in life. So I used to initially tell my husband, no, I'm happy with choti gadi. I'm okay. I'm happy with this. But then I realized these material things don't matter. But what matters is कि थोड़ा-थोड़ा progress करना चाहिए life. True that. वो चीज का thought process change होते ही I did started progressing slowly. And my husband has been always pushing me in that. Even when we moved to Muscat, I stayed there for 4 years. I was teaching in the school. I had a very tight schedule, but I was determined कि मैंने करना है तो करना है. To get up in the morning at 4 to 4, and I had to reach the school at 6. तब काम करके सारा कुछ करके भी I used to reach, and there also I was doing creative work. अगर आप बोलें कि थोड़ी struggle हुई या uphill हुआ, तो I think वो part सबके life में आता है. I feel कि अगर determination हो तो थोड़ा तो आप reach कर जाते हो उस level. And at the end, if you like your work, if you love what you are doing, that always push you, है ना? To the limit. And similarly, रचना जी, एक लाइफ पार्टनर जो होता है, उनकी जगह, उनका रोल किसी और के थ्रू रिप्लेस करना, इट्स इम्पॉसिबल. सो मैं जानना चाहती हूँ कि कितना रोल रहा, क्योंकि आपकी जर्नी सिर्फ एक पर्टिकुलर पोर्शन पे नहीं है. जहाँ पर आपका चाइल्डहुड जो था, आपने बताया कि बिल्कुल क्रिएटिव नहीं था, एंड जैसे ही यंग रचना ने अपने एक्चुअल लाइफ में कदम रखा, तो हर एक एंगल आपने एक्सप्लोर किया है आर्ट फील्ड में. तो ये सारा चेंजेस आपके हस्बैंड ने भी आपकी थ्रू आउट आपकी जर्नी में देखा है. सो उनका टेक क्या रहता है, उनका रिएक्शन क्या रहता है आपके आर्ट वर्क्स को लेकर? बहुत अच्छा. अभी जैसे मैंने टेबल्स क्रिएट किए सर के साथ, और क्लासेस के बिना भी जैसे किए 1-2 चीजें, he comes and tells me you're doing lovely work. He says कि now you should start managing a technique, start going, because I'm not tech savvy at all. So मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड दोनों बोलेंगे go see on the Instagram, Google, and increase your knowledge. Wonderful, wonderful, Rachna ji. And हर एक दिन जब हम सुबह उठते हैं, and if we love our work, तो एक ना फोर्स होती है अंदर जो हमें उसे करने के लिए मजबूर करती है कि हमें करना ही है. सो आज के टाइम पर अगर मैं आपसे पूछूं रचना जी कि आपकी बिगेस्ट इंस्पिरेशन क्या है? What inspires you every day? I would say me myself, because अगर मैं कुछ करती हूँ so I get into it madly sometimes. So like when I was creating resin table, night when I'm sleeping और मेरा project पूरा नहीं है, तो रात को सोते हुए भी I was watching videos कि how can I improve my technique or how can I go about it, you know. True, I agree. I agree 100%, Rachna ji. And similarly, financial independence is a big topic nowadays. अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके से लोग इसके बारे में बात करते हैं. जितने भी फेमस सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी यू नो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे आर डिस्कसिंग दीज आइडियाज विद यू नो मास पॉपुलेशन कि आप कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं. सो रचना जी, अगर मैं आपकी जर्नी को देखूं, आपके करियर को देखूं, आप बाय द टाइम आप हमेशा वर्किंग रही हैं, चाहे वो एक टीचर की तरह हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग आर्टिस्ट की तरह हो. सो अभी इस टाइम पर आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी इम्पोर्टेंट है, और आप उन लोगों को जो एक्चुअली देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी अपनी साइड से? I think it's a most important part of anyone's life, and I tell my girls that I want you to be financially independent. Some part of life, obviously, you feel, I felt, so I'm still dependent on my husband. He's never let me feel like that. बोलने से पहले ही वो चीज हो जाती है, मतलब. So मुझे लगता है हर किसी को financially independent होना चाहिए. तो अगर शायद मुझे लगता है कहीं मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रहती उस टाइम पे, तो शायद मैं आज करियर में काफी
अलग तरीके से होती. So like my husband asked me a question कि you're creating so many things, what if you don't sell? So I said I already have a backup plan. Plan B बोलता है, what is that? I said I have people in my mind जिनको मैं ये gift करने वाली हूँ. and similarly बहुत सारे ऐसे budding artists हैं या फिर बहुत सारी ऐसी women artists हैं जो अपने घरों में काम करते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते हैं, बट आपकी लाइफ को अगर मैं देखूं तो आपने हमेशा से सोसाइटी के बैरियर्स को तोड़ा है, स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा है. हर एक इंसान उस स्टेप लेने को कतराता है जो स्टेप आपने हर बार अपनी लाइफ में लिया, चाहे आपकी लाइफ कितनी ही चैलेंजिंग हो. सो आप उन लोगों को क्या कहना चाहती हैं जो वो स्टेप लेने से घबरा रहे हैं? आई थिंक एक फर्स्ट स्टेप लेना बहुत जरूरी है हमेशा. एक बार ही अगर आप वो फर्स्ट स्टेप ले लो और हेजिटेशन आपकी थोड़ी सी साइड हो जाए, then there is no looking back. Because I remember my first class when I did my course and I got started with the Times of India and Indian Express. I am from girls school and girls college, और मेरे को उस टाइम पे क्या होता था, लड़कों से बात करने में I used to be very scared. मतलब sight of a boy and I would like, you know, shrug off. So I was given a school, co-ed school, for the first day, first class कि आपने यहाँ जाके ये creative class लेनी है. मेरा first experience था, मेरा कभी ऐसे face to face experience नहीं हुआ. So they were like, ma'am, your chappals are very pretty. Ma'am, you're looking very pretty. बहुत nervousness थी, थोड़े हाथ भी कांप रहे थे, body भी shake कर रही थी. But I remember I still had that. I'm talking to you तो थोड़ा सा लग रहा है, you know, goosebumps कि यार मैंने वो कैसे किया था उस टाइम. तो वो first step से मुझे ये समझ आया कि I can do it, I can handle it. Right. Isn't that beautiful, रचना जी? आपकी लाइफ के बारे की ये बात है ना, जब मतलब वो जब आपने डायरी बनाई थी तब भी, एंड देन आपने जो अपना 11th क्लास में जो चार्ट बनाया था तब भी, हर बार एक ही स्टेप था जो आपको लेना था, एंड आपने घबराते हुए डरते हुए लिया, बट आपने कर दिखाया. एंड आई थिंक सभी के लिए यही है कि आपको स्टेप लेना चाहिए, एंड आई थिंक शायद आप उससे सक्सेसफुल हो जाओ, है ना? Yeah, I agree. So मैं आपको थोड़ा सा और फ्लैशबैक में लेके जाना चाहती हूँ. 2020 का टाइम जब कोविड था, एंड आई थिंक दोज डेज वर ट्रूली ग्लूमी. हर तरफ स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, बट समहाउ समवेयर हर एक इंसान ने अपना तरीका, अपना वर्जन ढूंढ लिया उस टाइम को ओवरकम करने का. सो हाउ वाज योर टाइम, रचना जी? किस तरीके से आपने उस टाइम को ओवरकम किया, और कैसा था आपका वो टाइम? Quite stressful. That time was actually stressful because I think not only us, probably many people lost their loved ones in that time. So did I, and it was difficult to cope up sometimes. But उस टाइम में मेरा क्रिएटिव उसमें ध्यान ही नहीं लगता था. मतलब I was so disturbed था कि मुझे कुछ क्रिएट नहीं करना है अभी, कुछ नया नहीं बनाना है. But I did work on myself. मैंने योगा ज्वाइन किया. मतलब I could not do yoga because I am a chronic back patient and I had lot of issues. So but धीरे धीरे I thought कि नहीं, ये mindset है, अगर mind को condition करूंगी तो ये भी हो जाएगा. So entire lockdown period and entire year, in fact I'm still continuing with my yoga. खाना खा खा के बोर हो गए. So then in the groups we started chatting and then we came up with the idea कि जिनका रेस्टोरेंट चलता है, let them make it at home and give something. It's a great idea. हाँ, so 3 महीने I did that work. कभी pizzas होते थे, कभी all different kind of things. So I started doing that and my friends and my society really liked it. So वो period totally मतलब अलग था. तो मुझे हंसी आती है कि मतलब मैं creative field से cooking के उसमें चली गई. And I did that. But I'm happy. Creative है totally. It's an art only. Yeah. Okay, so रचना जी, आप SD एकेडेमिया का एक बहुत ही बड़ा पार्ट रही हैं, एंड अब बहुत टाइम से हमारे साथ कनेक्टेड है. सो SD एकेडेमिया ने किस तरीके से आपकी हेल्प करी है टू बिकम ए बेटर आर्टिस्ट and to become a better person? A lot, ma'am, because all the teachers, including you, are really supportive. And sir ने बहुत support किया और बहुत अच्छे से guide करते हैं. And I think a teacher is one who tells you your mistakes and your plus and minus both. And I think all the teachers in SD Academia has that. It's not that you know कि आप सिर्फ good ही बोलेंगे कि ये बहुत अच्छा लग रहा है. You have to tell the person कि ये improvement चाहिए, यहाँ पे बहुत सारा scope है और यहाँ तुम गलत हो. इसमें academia has helped a lot and getting my creative thing back in my life. Right. So I give a big thanks to SD Academia for helping me out. Actually thanks हमें बोलना चाहिए, क्योंकि
जितना आप फील करते हैं, आप सब लोग फील करते हैं एसडी के बारे में, हम जब सुनते हैं ना कि आप जेन्युइनली क्या फील कर रहे हो, कि हर एक इंसान की ना जो एक्सप्लेन करने का तरीका है और जो फीलिंग है वो इतनी ऑथेंटिक है, सो वी आल्सो फील कि वी आर ऑन अ राइट ट्रैक। सो रचना जी, जो फर्स्ट सेल होता है ना, जो फर्स्ट सेलिंग होता है, या फिर चाहे वो गिफ्टिंग ही क्यों ना हो, वो बहुत स्पेशल होता है। चाहे उसके रिटर्न में आपको पैसे ना मिले हों, डिलीवरिंग करने के बाद जो कॉम्प्लीमेंट्स है, वो जो स्टोरी है वो हमेशा आपको याद रहती है। सो डू यू That's रिमेम्बर right. आपका पहला सेल एंड उस सेल से मिली हुई कुछ यादें आप मेरे साथ शेयर करना Yes. चाहेंगी? Yes, ma'am. A lot. I would say I would start from the recent one. You can see a big smile from here to here because just before this session, I had completed my order yesterday. किसी ने मुझे resin का कुछ Wow. order दिया था. ये it's a good feeling that when you Yeah. feel कि you've done your work up to the mark that the person wanted you to be. So Right, that right. was today. And back then when I started long back, साल में बहुत दिवाली मेला concept बहुत चलता था. जी. So I had created a pottery में एक shell की shape में बनवाया था. एक तबला के shape में ऐसा ढोलक and तबला and with a lid. So पहले वो मिट्टी के बर्तनों का बहुत होता था कि आप गिफ्टिंग में दे रहे हैं. I put it in the exhibition. एक वो लगाया था मैंने और एक ऐसा shells आप खोले ऐसे, तो एक के ऊपर एक छोटा shell है, ऊपर छोटे से मैंने flowers लगाए, अंदर उसके अंदर magnet fix करके, कपड़ा fix करके I made it like a box kind of a thing. Yeah. I got a first order for the two of the things, 40 pieces. So I Wow. Huge. Huge. It was huge for me. जब वो लेने आए और मैंने एक एक चीज पैक करके दिया उनको, so he was very happy and he says I'll get back to you on other things if I like. So वो एक feeling जो होती है ना, that's a very different feeling. True that, true that. So Rachna ji, nowadays social media is a big thing. Everyone is on social media, especially on Instagram. They are doing business on it and they are promoting their brand. So what social media means to you? Currently I would say बहुत थोड़ा use कर रही हूँ, but I am using it. I am Okay. following SJ Academia is on the top list. Then I'm following few more people who are creating this resin work, and one of them is Mohinima Das. Her work is amazingly beautiful. Yeah. I think she's from Delhi or Gurgaon, and when she creates her reels and all, she explains very well. And then, of course, sharing my own page and my work will give me a push for this. Push to increase your work, to reach to the people, big masses, basically. So, like you can see Instagram House of Resin, ma'am. I've created this page. Yeah, I'll show you this. I put here. Wow. Yeah. Wonderful. So it's House of Resin, it says. So beautiful. Your brand name is House of Resin, and you are going to participate in upcoming exhibition by SD Academia, that is Launchpad. So क्या theme आप वहाँ पर लेके जा रही हैं और इस theme के पीछे का क्या concept है? So when I started creating these pieces, और हमने जब colors use करने शुरू किए, तो apparently blue has been my favorite color always. And I feel it depicts royalty. मतलब मुझे लगता है wow. So मैंने blue का ही theme लिया. I created pieces on blue. Initially thought a lot कि क्या बनाना है. A lot of ideas came to my mind. Initial idea was let me take a table layout theme, where I will create a trivet, I will create mat, tissue box, and all this. And I lay it on a table, a blue table created. Then I thought, okay, let me create everything in blue that comes to my mind. That's why I've named it Blue Riona, my thing, which means royalty, royal color. Yeah, बहुत सुंदर. Thank you. जी. And similarly, रचना जी, हम हमेशा खुद के लिए, अपने आप के लिए बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करते हैं. ठीक है, एक स्पेशल मैनिफेस्टेशन की आने वाले टाइम पर कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए, तो एक ऐसी मैनिफेस्टेशन, एक ऐसी विश जो आपने खुद के लिए मांगी हो कभी, कि आपका जो फ्यूचर सेल्फ है वो ये अचीव करे. Yes, ma'am, I do. I feel success. I want success, and I've manifested success in the current thing that I've started. Slowly, steadily, but I should reach that level, So that is what I've manifested. Amen. And I think ये definitely complete होगा भी. And अभी just हमने universe में सारे words डाल दिए, and universe will answer you. It was a great conversation with you, Rachna ji. मैं आपको, as a student, मैं आपसे क्लास में मिलती हूँ, बहुत कम टाइम मिलता है आप सबसे बात करने का. But I think ये इंटरव्यू जितने ज्यादा आप सबके लिए अमेजिंग है, उतने ज्यादा मेरे लिए नॉलेजेबल है कि आप सबके पीछे इतनी सुंदर स्टोरी है, आपकी लाइफ, आप कहाँ से आए, आप किस तरीके से आप
यहाँ तक पहुंचे, it's just so inspiring. That's So right. similarly, अभी हमारी conversation यहाँ पे खत्म नहीं हुई है. अब मैं आपको लेके जा रही हूँ next segment में, which is rapid fire round. Okay, ma'am. And where you have to give me rapid replies, ताकि आप जल्दी जल्दी आपको दोनों ऑप्शंस से एक ऑप्शन चूज करना है. ठीक है, so let's start. So your biggest supporter in childhood, mom or dad? Difficult question, but I would say mom. Okay. Your biggest supporter now, husband or kids? That is something tough, I would say. Husband. I would go for my husband. Traveling free for a month or spending time with family? Spending time with family, for sure. Family first, yeah. No working Monday or working Sunday? No working on Sunday. Sunday off. Okay. Working Monday is better. Okay, आपने switch कर दिया. Got you. Okay, so working with 2:1 resin or 3:1 resin? 2:1 resin. Yes, easy to go with. Working on a small project or large projects? Large projects. Okay. Spending first earning on shopping or investing money for future? Investing money for future, definitely. Indeed. So you like subtle shades or vibrant shades? It depends what I'm looking at, but I would say vibrant. Yeah. Okay, last. So last is you have to tell me your favorite Bollywood dialogue which defines you. You live in Mahanagari, Mumbai, so don't tell me you don't watch movies. I don't. I actually don't know movies. I hardly watch. मुझे ये भी नहीं पता चलता कब कौन सी आई कौन सी गई. तो कोई ऐसा कोट या कोई ऐसी बात जो आप हमेशा आपको लाइफ में याद रहती है? I would only say one dialogue. जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी. Whoa, that is awesome. That is awesome. I think DDLJ is iconic. और आपने बहुत ही आइकॉनिक डायलॉग यहाँ पर मुझे बताया है उन सभी लोगों के लिए जो डर रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी जीने से. तो जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी. It was a fun conversation with you, Rachna ji. You have shared such beautiful experiences of your life, and I truly wish you all the best for upcoming exhibition at SD Academia. Thank you so much, ma'am. It was lovely talking to you and sharing what I had in my life, and you've taken me back to the memory lane. And a lot of things are now flashing back, So I had a very good session with you, indeed. Thank you so much. Most welcome, Rachna. I'll see you super soon in the exhibition. Take care. Bye-bye. Bye-bye, ma'am. Have a good day.